वेलकम बैक ब्लीच वेस। अगर नहीं हो तो बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो रिलेटेड है इचिगो से। पहले इसके पावर एंड दूसरे इसके स्वॉर्ड और ऐसे ज़नपाकुतो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्लासिक इंट्रो। इचिगो कुरासाकी द सब्स्टिट्यूट सोल रीपर या शिनिगामी, जो पहले एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट था, बट व्हेन ही मेट रुकिया अ शिनिगामी और सोल रीपर, ही इनहेरिटेड हर शिनिगामी पावर. Now, time to discuss different abilities of Ichigo. As I told you, he was a substitute Shinigami. So of course, he got Shinigami power, and with this power, he got a Zanpakuto named Zangetsu, which is way messy for a substitute Soul Reaper. And Bleach में, according to the look of your sword, क्या वो कितनी crazy sword है, ये resemble करता है कि वो Shinigami के पास कितनी ज़्यादा crazy amount of spiritual energy है. So therefore, जो उसका Shikai form था Zangetsu का, Ichigo can unleash powerful Getsugo Tensha and concentrated blast of spiritual energy. But Ichigo was a substitute Shinigami, so to become enough powerful, he trained his inner Hollow White, and इसी के साथ it is another ability which is Hollow Power. So by intense training, he mastered speed and strength. Now he has spiritual energy and Hollow abilities. Now time for another ability, Bankai Tensa Zangetsu. दूसरा और एकदम अलग Ichigo का Bankai was minimal but cool with sleek black sword. His Bankai Tensa Zangetsu helped him to fight Bakuya to Aizen. But after losing his Shinigami power, Ichigo developed a new source of strength, Fullbring. To regain his Shinigami power, Ginzo Hyuga helped him master this ability. इसमें the user can manipulate the spiritual energy around him. Final ability which can blow your mind, that is true Shikai, or I say true Bankai. The true nature of Zangetsu was revealed during 1000-year Blood War arc. The true sword was not Zangetsu, it was his inner Hollow White. So after combining all his above mentioned abilities, he formed true Bankai. Now the main questions come, why Zangetsu keep changing? देखो, जो Zangetsu या Zanpakuto का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स पे ही डिपेंड करता है, describing his users spiritual power. But in case of our Ichigo, who is a Hollow, Quincy and a Shinigami, a Fatal Jingatsu ability, the conflict between his Hollow and Shinigami part can literally be seen in his character development arc, and therefore because of all these types of power and abilities, his Zanpakuto keep changing. So at last ये वीडियो एंड होती है, एंड देयरफॉर अगर तुम्हें कोई भी कमेंट करना है या कोई भी मेरे को चीज बतानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, शेयर योर आइडियाज. एंड ये वीडियो मैंने छोटी रखी है तो इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो जो ब्लीच अभी तक स्टार्ट किए नहीं है. बाकी मेरे चैनल पे ब्लीच का रिव्यू भी है, सो यू कैन चेक आउट. अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, सायोनारा.